लाइक 160 रुपीज पे कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माँ की गो भूले कि पागल चुप करो। Hello guys and welcome back to my channel. मैं हूँ तनिमा and hope you all are doing very well and safe. So today I created this look with my new products जो मैं मेरा बर्थडे हॉल पे दिखाई थी. Make sure मेरा बर्थडे हॉल इधर से जाके चेक कर लेना. So guys वीडियो का लास्ट में मेरा रिव्यू भी रहेगा और बहुत सारा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स मैं ये ब्यूटीफुल लुक को क्रिएट करी हूँ. आपको मेरा ये लुक पसंद आया है देन वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा. उसके साथ एक लाइक कर देना. चैनल पे नए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब. सो चलिए और डिनर करके जल्दी से शुरू करते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey, so first I have to remove my specs. Then I'm gonna use Good Vibes Pomegranate Toner. Then I'm gonna use Pond's Super Light Gel, and it's a new product, but my mama already used it, and I love the fragrance, you guys. Then I'm gonna use Good Vibes Rose Hip Serum. Then I'm going to use my very new foundation. This is Insight Ultra Thin Foundation. The shade is 03 Sun Beige. On the half side of my face, I'm gonna blend it with a beauty blender. On other side I'm gonna blend it with a brush. It has very sheer coverage but it has a dewiness. So मैं इसका सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं ब्लेंड करूँगी विथ ए ब्यूटी ब्लेंडर. आप देख सकते हो एकदम भी मेरा स्किन टोन से शेड मैच नहीं हुआ. पूरा ऑरेंज हो गया मेरा फेस एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट गाइज. सो मैं एक वाइटिश लाइक मेरे स्किन से बहुत ज़्यादा फियर एक कंसीलर ले रही हूँ एंड दैट इज़ डार्लिंग इसाबेला कंसीलर. एंड इससे मेरा फेस थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है ना. एंड देन मैं फेस को सेट कर लूँगी एंड थोड़ा सा कॉन्टूरिंग वगैरह कर लूँगी. एंड देन मैं डायरेक्ट चले जाऊँगी मेरा आई मेकअप पे. फॉर आई मेकअप टुडे आई एम गोना यूज़ माई न्यू प्रोडक्ट दैट इज़ मार्स कॉस्मेटिक आई शेडो पैलेट. एंड हियर इज़ द स्वॉचेस. ओ गॉड जस्ट डैम. ओके आप देख सकते हो कितना अच्छा है ना. नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द आई लुक. सो टुडे आई एम यूजिंग दिस कलर टू क्रिएट माई आई लुक. फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग a line on my crease. Then I'm gonna blend it with the pink color. देन मैं फिर ब्राउन कलर से इसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूंगी. आउटर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर. देन थोड़ा सा पिंक अप्लाई करूंगी एंड इनर कॉर्नर से मिडिल ऑफ द लिड तक मैं शिमर कलर को अप्लाई करूंगी. एंड दिस ग्लिटर कम शिमर कलर हैज अ डिफरेंट बट अमेजिंग फॉर्मूला. आई एम जस्ट लव इट गाइज. एंड हियर इज माई complete eye makeup after applying the falsies. Now I'm gonna dust off my all extra powder and I'm gonna apply the blush from the Swiss Beauty highlighter. I'm gonna take these two blush shades, and for highlighter I'm gonna use Mars highlighter. These two products are my newest product and I just love with these two highlighter guys. Okay, then next move on to my final and my favorite part of my makeup, that is lipstick. And first I'm gonna apply Swiss Beauty lipstick and the shade is Cute Nude. Then I'm going to use Mars lip crayon and the shade is I Have Got This. And the mixture of the lipsticks looks so fire. I mean my favorite guys. So guys, this is my final finished look. Hope you liked this look a lot. I know because I like this look a lot. So coming to the products review. So first I'm gonna tell you about this Pond's Super Light Gel. Nowadays this is my one of the favorite skincare product for oily to combination skin. Then coming to the foundation, the foundation is like below average. I don't like it too much. It's just okay and मेरा शेड भी मैच नहीं था एंड कवरेज तो बहुत ही शेयर है बट 160 रुपीज़ पे आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप चाहते हो आप बिगनर्स हो कि एक लाइट कवरेज फाउंडेशन बिगनर्स फ्रेंडली देन यू कैन गो फॉर इट. एंड इसमें 4 शेड ही है सो समझ के पिक कर लेना. दैट्स माय रिकमेंडेशन. देन coming to the palette, I just obsessed with this palette. You can see इसमें और भी 2 शेड है
जिसमें एक न्यूट्रल काइंड ऑफ शेड था, लाइक स्मोकी पैलेट काइंड ऑफ, और एक था ब्लू और ग्रीन पे, मुझे याद नहीं, और एक है ये पर्पल और पिंक जो like I'm obsessed. You can see the eye look, just a bomb. Okay, next move on to the eye lashes. So बहुत सही आई लैशेस है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए ना बहुत ही गुड क्वालिटी का आई लैश ग्लू चाहिए, क्योंकि बहुत ही थिन है, ठीक है। थिक आई लैशेस जो होते हैं ना वो नॉर्मल सा ग्लू से भी लग जाते हैं, बट इसमें वो नहीं होता, बहुत ही थिन लाइन है इसका। सो अच्छा ग्लू नहीं होगा तो ये लाइक अटकने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाले हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द स्विस ब्यूटी ब्रिक हाइलाइटर, एंड आई एम जस्ट फॉल इन लव विद दिस पैलेट, लाइक हाइलाइटर पैलेट। डार्क टू फेयर स्किन टोन भी इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ कलर। ये दो कलर इज वेरी गुड फॉर ब्लश एंड दिस टू कलर इज वेरी गुड फॉर हाईलाइटिंग। नेक्स्ट मूव ऑन टू द मर्स हाइलाइटर, बहुत सही है। इट हैज अ मिरर एंड वेरी बटरी हाइलाइटर। आप एक हाइलाइटर फैन हो देन यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। और आप बिगिनर्स हो देन मैं ये वाला हाइलाइटर को सजेस्ट करूंगी बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ कलर्स, और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा हाइलाइटर है और आप एक हाइलाइटर का फैन हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू लिपस्टिक्स। दोस टू लिपस्टिक्स आर माई लाइक रिसेंट फेवरेट वन। मैं इसका ऑलरेडी रील्स नहीं शॉर्ट्स भी शेयर कर चुकी हूँ, या दोनों ही बहुत गुड क्वालिटी है, बट दिस इज नॉन ट्रांसफर प्रूफ और दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, प्योरली ट्रांसफर प्रूफ। सो दोज आर like my recent favorite lipstick. So guys, this is today's video. Hope you like this look and my review video. So वीडियो पसंद आए then please do subscribe to my channel and एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल इज हियर ऑल्सो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस, see you in the next video. Till then, tata, love you, take care.